third episode of Desi Fire podcast. And for those of you who are joining us for the first time, in this series of podcasts, we discuss how to become financially independent, how we became financially independent, and we are planning to retire early. This is Ravi, and I became financially independent in 2022. I'm Ram, and I plan to become financially independent in the next 5 years. Uh, in this episode, we'll talk about the things that you need to figure out before you figure out your FI number. Each one of us has a different set of needs, and that'll have a bearing on how that number that you should be gunning for. So we'll probably go into the details of how we went about those decisions. What are some of the factors at play, some of the trade-offs, and possibly even some of the moral dilemmas. Sure. You want to talk about that a little more? Yeah, I do. तो बेसिकली चार मेन चीजें हैं जिसके बारे में हमको बात करनी पड़ेगी. एक तो अभी मेरे खर्चे कितने हैं, सो व्हाट आर द करंट एक्सपेंसेस. सेकेंडली, हाउ डू आई थिंक और व्हाट माय एक्सपेंसेस विल बी इन रिटायरमेंट, क्योंकि कुछ खर्चे जो अभी हैं वो शायद तब नहीं होंगे, कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि तब होंगे और अभी नहीं है. थर्ड, लॉन्ग टर्म गोल्स. एटलीस्ट कौन कौन से लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में हमें अभी ही डिसीजन लेना होगा. सो लेट्स से इफ यू आर प्लानिंग टू रिटायर अर्ली, which long term goals you need to be absolutely clear about on day one. And finally, another very important decision is where will you retire. क्या आपकी लोकेशन होगी, कौन सी सिटी, कौन सी कंट्री, एंड अबाउट प्रॉपर्टी बेस्ड डिसीजन की घर है आपका या रेंट करते रहोगे एंड ऑल ऑफ दैट. So these are broadly the things that we like to talk about. सबसे पहले first thing that I like to talk about is figuring out the current expenses. अब ये current expense find out करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था. I know there are bunch of people who do this and it's a great thing that they do कि वो लोग नोट करके रखते हैं कि अच्छा हाँ आज मेरा ये खर्चा हुआ, आज वो हुआ. या काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा डिजिटली इंक्लाइंड हैं कि most of their expenses happen वाया यूपीआई, वाया डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, तो उनका फिगर्ड आउट रहता है. मेरा ऐसा नहीं है. मेरा काफ़ी खर्चा कैश में भी होता है, काफ़ी क्रेडिट कार्ड में भी होता है. आई एम नॉट समवन हु डज वेरी वेल अकाउंटिंग, बट आई हैव अ ब्रॉड आइडिया. और वो ब्रॉड आइडिया पता लगाने के लिए मैंने 3 ब्रॉड कैटेगरीज कंसिडर की. पहली कि जो रेगुलर मंथली खर्चे हैं, जैसे कि स्कूल की फीस देनी है, या आपका हाउस हेल्प को जो पैसा जाता है, या आपका बाहर खाने पीने का जो पैसा जाता है, योर रेगुलर मंथली एक्सपेंसेस. द सेकेंड कैटेगरी वॉज द एनुअल एक्सपेंसेस, जैसे इंश्योरेंस है दैट यू नीड टू पे मे बी वंस अ ईयर. आई डोंट नो कि सोसाइटीज में मेंटेनेंस आप लोगों के यहाँ कैसा होता है. सो सम ऑफ दी सोसाइटीज हैव मंथली मेंटेनेंस, कई जगह एनुअली वो आपसे एक ही बार में ले लेते हैं. There are other maintenance contracts, annual maintenance contracts as well. So those annual expenses. And third is the category of discretionary annual expenses कि आप कितने vacations के ऊपर जाते हो, और साल में 2 देसी vacation या 1 international vacation, or whatever your ballpark estimate for these expenses are. So these are 3 broad expenses that I consider when you talk about this category of आज की डेट में मेरा खर्चा कितना है. Ram, did I miss something? Yeah, I mean, if you're talking about today's expenses, you're also looking into the future. You probably also want to look at some big ticket purchases you might want to make along the way. If you're planning to buy a house in the future, I haven't bought a house so far. So that might be something that I need to think of. It either gets factored in as rent, or if you don't fancy renting all the time and want to have a place to set up, that's something that you need to think of. You need to think about your car. I think that's a big decision. And of course, I think you're very shy about it, but I believe you're also into electronics. So I'm guessing, I mean, these days you need to really factor that in. Laptops go out of style. Phones go out of style every now and then. I think and again, I think especially if you're like an Apple fan, that's probably a big ticket expense you need to think of. Well, it does. मतलब ऐसे ही थोड़ी $1 trillion कंपनी बन जाएगा. मतलब someone has to contribute to that.
यार बट जहां तक मतलब खर्चे की बात है और जो तुम कार की बात कर रहा है, अब मेरे पास में आज कौन सी कार है मुझे पता है उसका क्या खर्चा रहता है, सो एनुअल इंश्योरेंस कॉस्ट के अंदर कार की भी इंश्योरेंस आ गई। बट अब अगले 5 साल के अंदर मैं अज्यूम कर सकता हूं कि मे बी आई चेंज अ कार, गेट अ न्यू कार, एंड आई हैव अ रफ आइडिया ऑफ रफली कि अच्छा हाँ, जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं अगर अगली कार लूंगा भी अगले 5 साल में तो वो 15 से 20 लाख की गाड़ी होगी, उससे कम की मैं लेने वाला नहीं हूं, उससे ज्यादा की मैं लेने वाला नहीं हूं। दैट्स ब्रॉडली द सॉर्ट ऑफ कार दैट आई एम गोइंग टू गेट। बट आई एम 40 राइट नाउ। ये तुम कार का कैसे एस्टिमेट कर, अब मान ली जब तक 75 के होंगे तब तक तो कुछ मतलब फ्लाइंग हाइपरपॉड और पता नहीं क्या क्या आ गया होगा, उसकी क्या कॉस्ट होगी क्या नहीं होगी। सो हाउ डू यू इवन अकाउंट फॉर दी सॉर्ट ऑफ गैजेट्स दैट will be available say 20 years from now, and what their costs are or what their costs are going to be? So how do you even account for that? Yeah, I think it's tricky, but I would assume that, I mean, whenever a new product gets launched, it'll typically be at a very similar price point. So the way I have, for example, factored it in my model is I've assumed whatever that number is, let's say it's a 15 lakh car or a 20 lakh car, I assume that it'll have a certain useful life. And I just converted it to a monthly cost, saying this is what it costs me to cost for me to own a car. I'm just assuming that when, let's say, the next car comes in, which is self-driving, there'll hopefully be something at that price point for me to be able to just get from point A to point B. Thankfully, I'm not a big auto buff or anything, but so I don't think I need to have the latest thing that Elon Musk screams of. नहीं भाई, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दी कार्स। जैसे कि से फॉर एग्जांपल फोन्स की अगर तुम बात करेगा तो आज की डेट में यू हैव 10,000 रुपी फोन्स एज वेल एंड 1.5 लाख रुपी फोन्स एज वेल। प्रोजेक्टिंग आज से 25 साल पहले अगर तुम किसी से बात करता है कि हाँ यार फोन्स होंगे विच वुड बी प्रोबेबली इक्वल टू अ मंथ ऑफ योर एक्सपेंसेस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, तो इन सब चीज़ों के बारे में आई डोंट नो, आई गेट कंफ्यूज कि इसको मैं कैसे फिगर आउट करूं। और वन ऑफ द थिंग्स इज कि बच्चे की एजुकेशन है। अब यार एवरीवन सेज कि हाँ बच्चे की एजुकेशन के लिए आपको पैसे अभी से बचाने होंगे, एंड स्पेशली इफ यू आर समवन हु इज प्लानिंग टू रिटायर अर्ली एंड प्लानिंग टू रिटायर। से मैं अपनी ही बात करूं, सो आई एम क्लोज टू 40, आई हैव अ 2 year old किड। अब पता तो है नहीं ना कि भैया वो आगे जाके क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो हाउ डू यू अकाउंट फॉर कि बच्चे की एजुकेशन के लिए स्कूल की कॉस्ट मुझे पता है कि क्या है, एंड ब्रॉडली वो इन्फ्लेशन के साथ में एडजस्ट होके चल जाएगा काम। एंड स्कूल कॉस्ट जयपुर वगैरह में तो स्कूल कॉस्ट आर नॉट अ सिग्निफिकेंट फैक्टर। आई एम श्योर सिंगापुर इज अ होल डिफरेंट बॉल गेम व्हेन इट कम्स टू किड्स एजुकेशन। बट thinking long term, from an India or from a Desi perspective, college is costly in India and you need to save for that. Yeah. So how do you account for that? So let's break it into two parts. I think the easier part is you talking about 25 years back, nobody could have imagined that an Apple iPhone would be a cost to factor. I think for that you can probably just assume a certain amount, like a pocket money kind of a thing for the year, and you say, you know what, I'll factor that in and I'll spend it the way I like. Anything beyond that, you probably just need to have the discipline. That's how I'm factoring it in. I have like a small earmark saying, you know what, if I want to spend it on stuff, I'll keep that. Yeah, education is pretty tricky, and again, education is a scale, right? I mean, it literally, when I take that decision right now, I feel so guilty saying that, oh my god, I'm not saving more. I should be saving for, let's say, a US Stanford graduation plus an MBA plus whatever my kids want to do. And well, sometimes it feels like, am I being a bad parent? Because I'm taking the lower cost option, or factoring in a lower cost option. But I mean, jokes apart, I think we kind of know what the current cost is. The best thing we can, the most logical thing we can do is assume that it grows at the rate of inflation. Beyond that, if, for example, we read about how
education, the cost of education took a hockey stick in the US over a certain period of time, I don't think anybody can factor for that. At that time, hopefully, if something like that happens, there'll be stuff like financial aid, there'll be some kind of way to support kids through that education. But yeah, there is of course some level of ambiguity. How are you factoring there? Or how are you planning it for your son? Like मैंने honestly speaking, so what I looked at was कि आज की डेट में तुम्हें एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करना है प्लस एमबीए करना है, लेट्स से IIT, IIM or an NIT, ISB sort of a situation. Roughly today it is going to cost you anywhere from 30 to 40 lakhs का उसका रेंज रहता है. You look at other prominent, जैसे CA हो गया, CA का तो कोई खर्चा ही नहीं है, being really honest. Law is becoming costly, but again, if you're doing law, probably 15-20 में तुम्हारी कहानी निपट जाएगी. Medical is a little bit costly, but again, if you get into a decent enough, good enough government college in India, 50 is good enough. So what I've done is कि भाई मैं आज की डेट में जो मेरा FI नंबर है उसके अंदर मैंने 50 लाख ईयर मार्क करके रख लिया है. ये जो 50 लाख है ये लॉन्डे की एजुकेशन के लिए है. अब आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि जो भी इसका इन्फ्लेशन होगा वो इन्फ्लेशन जितने रिटर्न्स में जनरेट कर लूंगा. और मतलब इफ यू लुक एट द पास्ट ट्रेंड्स, इंडिया में तो उतना फाइट नहीं है. हाँ, अब अगर ये हुआ कि उसको बाहर जाना है एंड देन बाहर जाके पढ़ना है एंड ही हैज टू डू हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम अब्रॉड और उसको स्कॉलरशिप, तो अब उसको स्कॉलरशिप वगैरह देखना पड़ेगा. मेरे सर की जिम्मेदारी नहीं है, मैं नहीं करने वाला हूँ. मैंने आज की डेट में 50 लाख रुपया रखा है, जो वो इन्फ्लेशन से बढ़ता जाएगा वो मैं उसको दे दूंगा. दैट इज ईयर मार्क. उससे ज्यादा चाहिए तो या तो खुद कर, स्कॉलरशिप्स हैं, फाइनेंशियल एड है, वो सारे काम कर. एंड मे बी, सो वी आर टॉकिंग 2040 हियर, सो इट इज स्टिल 18 years away. हो सकता है तब तक मेरी फाइनेंशियल स्टेटस जो है इज द मार्केट्स हैव डन वेल, देयर आर सम मून शॉट बेट्स दैट आई हैव टेकन, उनमें से कोई भी बेट जो है वो बम्पर निकल गई. इफ आई हैव एक्सेस कैश, यस आई विल ऑब्वियसली लाइक टू हेल्प माई किड, बट बियॉन्ड दैट नो. तो 50 lakhs is the number that I am going with considering 2022. बाकी जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि नहीं कर सकता यार. तुम अगर आज की डेट में से फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट समथिंग लाइक, अच्छा हाँ बच्चा जो है वो स्टैनफोर्ड से पहले अपना ग्रेजुएशन करेगा, मेडिकल के अंदर जाएगा, वहां पे पोस्ट डॉक करेगा, एंड तेरे तो दो हैं, तो आई एम नॉट वेरी श्योर. आई थिंक मतलब दोनों अगर तेरे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, अमेरिका जाके पढ़ रहे हैं, तो 5-6 करोड़ का खर्चा है आज की डेट में इसका. आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर्स बट इट वुड बी अराउंड दैट. एंड टू amass that, you will have to work a lot longer. And ये सब किया और उसके बाद पता चला कि नहीं भाई साहब जा रहे हैं अपने एमईटी. तो इतनी सारी जो मेहनत की है that goes to, you know, you'll have, if you want to save enough so that your kids can go to Stanford and study medical there, we don't know whether they'll be that capable or not, and whether they would want to do it or not. But you save for that, and then you realize, okay, I worked 5 years extra or maybe 10 years extra for this, which essentially doesn't mean anything. So I don't think utna high. I'm not keeping that. But again, that is a decision. कि if you are planning to retire early, you need to take a call कि आज की डेट में आप क्या चाहते हो. आज की डेट में आप ये चाहते हो कि उसका इंजीनियरिंग प्लस एमबीए का इंडिया में, या यू नो मे बी जस्ट ग्रेजुएशन का उसका खर्चा निकल जाए. लोन्स पे लेके करते ही हैं यार. मतलब तुम, आई डोंट नो वेदर यू टुक अ लोन और नॉट. माय वाइफ व्हेन शी डिड एन एमबीए शी टुक अ लोन फॉर दैट एंड इट वर्क्स मैन. कोई दिक्कत होती नहीं है. इफ यू गेट इनटू अ गुड कॉलेज, लोन्स आर वेरी इजीली अवेलेबल. एंड आई बिलीव दी इतना ज़्यादा हैंड आउट देना भी नहीं है यार बच्चे को. मतलब इफ यू गिव एवरीथिंग सर्व्ड ऑन अ प्लेटर, इट माइट नॉट बी अ वेरी गुड आइडिया इन द फर्स्ट प्लेस. Yeah, I think that's where your appetite comes into question. It's a point of where your comfort is.
Do you want to like set them up? Do you want to like underwrite their whole education? Do you want to make sure they don't have a huge liability? I think these are some of the things that we grapple with. And even I don't have an answer. I definitely don't have an answer to these right now. But it's something that my wife and I constantly discuss. She of course wants to set up the kids as much as possible for the future. I, on the other hand, I think I'm more in the tough love kind of zone. कि भैया हाँ थोड़ी तो हम मदद करेंगे यार, but there are things that they need to take care of themselves as well. And what about the wedding part? That's another thing that again, every individual is different. What do you think about Exactly. your kid's wedding? Yeah, I think that's tricky. I think wedding, I think it's way too. It's a big money sink. Personally, I believe it's a big money sink. But it's also the social construct. Hey, this is how things are done. This is how things happen. Thankfully, I feel the way the expectations I have of a wedding are not as ostentatious as some other destination weddings that I know of. So hopefully, my kids aren't thinking of something like that. Maybe yes, something to get them started. Maybe to support them in that. But again, yeah, it depends. If my kids want like Hawaii make fast 5-star hotel made destination wedding, yeah, that's not happening. But maybe something like smaller, less grand, but something that checks important boxes. Yeah, probably I'll plan for that. हम तो कुछ नहीं What about करने you? कुछ नहीं, ढेला नहीं, मतलब ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि अच्छा हाँ ठीक है, तुमको शादी के बाद में कहीं घूमने जाना है तो तुम्हारा वो फ्लाइट टिकट और होटल का खर्चा हम दे दूंगा, बट जितने भी गेस्ट आ रहे हैं, कहाँ पार्टी हो रही है, क्या है, ऑल दैट हैज टू बी ऑन द किड यार, बिकॉज फंडामेंटली मैं अगेन दिस इज अ कल्चरल थिंग. तो मेरी वाइफ मारवाड़ी है, मैं पंजाबी हूँ. हम लोगों ने जितनी भी शादियां देखी है ना, मतलब इतना खर्चा होता है यार, और इतना वेस्टफुल एक्सपेंस है. एंड दैट इज समथिंग दैट आई हैव सीन सो मेनी पीपल. वो लोग जिंदगी भर पैसा इसलिए बचाते हैं कि हाँ यार बच्चे की शादी के अंदर लगाना है. एंड यू नो, एंड आई हैव सीन पीपल हु वुड prioritize the wedding over education. I've seen people who will prioritize the wedding over their own retirement. For me, it is definitely a much lower priority than. So my top priority is कि भैया मेरे को अपना retirement comfortable चाहिए. Second priority is kids education. Third priority is kids wedding. So kids wedding is probably the same amount of priority that I would give to world tour पे जाना है. इच्छा है कर लेंगे. And उस टाइम पे again, उस टाइम पे पैसा हुआ, उस बेसिस पे मैं कॉल लूंगा. बट आज का जो मेरा FI नंबर है उसमें तो मैं किड्स वेडिंग के लिए, जैसे किड्स एजुकेशन के लिए मैंने 50 लाख ईयर मार्क करके रखा है, किड्स वेडिंग के लिए मैंने 0 ईयर मार्क करके रखा है कि आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनीथिंग फॉर दैट. बट देन अगेन दैट्स कॉल यू नो दैट वुड प्रोबेबली बी टेकन लेटर. Yeah, I mean, I my thinking is similar. Maybe priority order में मतलब without going, so education is probably going to be most important. Kids education, making sure they have something to get going with. But yeah, education is probably going to be a small portion of, in terms of absolute numbers, small portion of that, and yeah, probably lower in the pecking order. True. There is another thing. Again, this is primarily for users. These are two things that I personally struggle with. I'm not able to take a call on this, और मुझे समझ नहीं आता है. One is कि what will we leave for the next generation? So, what will we pass down? And secondly, ये जो end of life वाला portion रहेगा, last 5 years and last 10 years or something like that, जो कि I have seen retirement homes for example. जैसे couple of months ago मैं देहरादून गया था. So देहरादून के अंदर a little away from the city there is a place called Malsi, 10-12 kilometers from the center of the city.
वहां पे अंतरा करके एक मस्त रिटायरमेंट होम है, मतलब इट लुक्स लाइक अ परफेक्ट 5 स्टार होटल टाइप का उनका सीन है. एंड ये मैक्स रूप वाला ना. मैक्स वाला, करेक्ट करेक्ट. हम्म. तो मेडिकल केयर वगैरह एवरीथिंग इज टेकन Yeah. केयर ऑफ बाय देम. एंड द एंटायर कॉन्सेप्ट इज दिस दैट इफ यू हैव मनी, आप वहां पे जाके एक फ्लैट खरीद लो एंड एवरीथिंग विल गेट टेकन केयर ऑफ. आई डोंट थिंक रिटायरमेंट होम्स एटलीस्ट इंडिया के अंदर अभी उतने पॉपुलर हैं. मतलब दिस इज द ओनली वन दैट आई हैव सीन दैट आई वुड यू नो. वरना क्या होता है यार, जिस घर में तुम रह रहे हो यू कीप लिविंग इन दैट. दिस इज प्रॉब्ली द ओनली वन विच आई वुड लाइक टू गो टू. बट यार उसका कॉस्ट वगैरह जो था ना, सो अंतरा करंटली कॉस्ट यू समथिंग लाइक 3.5 CR से तो उनका स्टार्टिंग है. तो these are the things that I'm a little confused about. कि एक तो what will I leave for the next generation? I'm not sure of that. And this being the second part, कि do I need to keep some money for this end of life thing? What do you think about these? Yeah, I think money wala is tricky. Matlab, I don't know if my kids at that point, once if let's say they have set up, would they expect me to leave anything? Do they need anything? Yeah, I mean, even I'm not really factoring in ki I'm leaving any money for them. I'm guessing, I mean, you're also not expecting to get anything from your parents or anything. So, in my case, I'm not expecting anything coming from them. So, I would say, I mean, similarly, I wouldn't expect my kids to expect something from me. मतलब अगर मिलता है तो ठीक है, but I'm not really planning for it. Yes, if they need something, they need my support. I want to be able to be there to stand with them, support them wherever it's possible. But yeah, it's not like by the time I'm gone, while I'm away, while I'm no longer on this planet, they see my will and they have like a big bequest. As such, yeah, even I don't plan on that. As for end of life care, that's tricky. It's just so far out. It's another what, 30, 40 years. So, how I am thinking about it is कि यार मेरा जो FI नंबर है उसमें मैं certain amount of buffer तो रख के चलाऊं, because I don't want कि हाँ भैया 80 के हो गए और पैसे खत्म हो गए. अब I am not very confident of living to 75, 80. Yes, medical care would improve and all of that, but the sort of lifestyle that I have, तो अगर कुछ बच गया at that point of time तो छोड़ जाएंगे. अगर कुछ बच गया तो विल गो टू अ रिटायरमेंट होम. सो दीज आर दोज जैसे कहते हैं ना कि लग्जरी या अबंडेंस वाला फेज अगर हुआ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो तब की तब देखेंगे. बट अगेन नॉट समथिंग दैट आई एम यू नो कीपिंग अ पोर्शन एज अ पार्ट ऑफ माई FI नंबर की नहीं यार ये जो है ये मेरे को अपने बच्चों को पास ऑन करके जाना है. बिकॉज सम पीपल हैव दैट. सो say for example जैसे कि तुम बोला you are not really expecting anything from your parents. In my calculations I'm not really expecting anything, but yeah, same thing. When I say not expecting, I put zero in the sense not that they don't intend to or anything. Correct. It's just like so, I don't expect anything. Yeah. So I've had this conversations with my dad, again my granddad, and सब कह रहता था कि हाँ ठीक है हम तुम्हारे लिए एक मकान छोड़ के जा रहा हूँ, हम तुम्हारे लिए एक मकान छोड़ के जा रहा हूँ. सो आई हैव हैड दिस कॉन्वर्सेशन विद डैड एंड ही यू नो कि अच्छा हाँ ये जो सॉर्ट ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट दैट आई हैव, देयर इज अ प्लॉट ऑफ लैंड, कि अच्छा हाँ ये लिया है अब इसका पर्पस क्या है. नहीं इसको कभी बेचना उचना नहीं है, ये जब तुम मरेगा तो तुम जो है अपने बच्चे बस कहाँ से मतलब I just cannot think like that. But there is that sort of that thing is there and a lot of people have that. That's all that I'm trying to say. I'm not saying कि मेरा point of view सही है या मेरे father का point of view सही है. Actually, that's a good point. It has to be more of a generic approach. Yes, there's probably some kind of an attachment to handing something down to the next generation that we don't appreciate, but yes. But there are people who do and हाँ मतलब आपको ये so before you finally pull the plug on retirement or before you even decide that what is my FI number, उसके अंदर तुमको फैक्टर करना होगा कि either you are it might be zero, you might factor it in and you decide it's zero. You decide it's zero. To your point on end of life care, I think
Antara, which you're talking about, I mean, I think you'll find a scale again. Even there, it'll be like a spectrum. You'll find different options. I don't know Yeah, of other options yeah. which So it starts don't from cost. 3.5, goes to 8. तो मैं तो बॉटम ही बता रहा था तुमको नहीं साढ़े तो you're like thinking Astoria Waldorf plus. I'm saying उसके नीचे भी तुमको options मिल जाते हैं. I know of like options that I've seen in Hyderabad. I know of some options in Coimbatore. So I know not all of them are like in that price bracket. पता नहीं मतलब आई हैवंट रियली मतलब दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई केम अक्रॉस इट और वो भी द की रीजन फॉर दैट वाज व्हाट हैपेंड वाज कि हम लोग उसके पास में द एयरबीएनबी वी हैड was close to it and it looked like a very fancy hotel, so we just walked in and then we realized कि अरे ये तो होटल नहीं है. This is that sort of property. तो वो था. ये बता one second. So I mean, you've been in Jaipur for a while, and you decided to go to Jaipur after experiencing everything in the metros. So now you decide to shift to Dehradun, yeah? नहीं. The mountains are called for It was just कि वहाँ गए हुए थे तो देख लिया, just checking it out. यार रहना तो जयपुर में ही पड़ेगा. There are multiple reasons for it कि घर यहाँ पे है, कॉन्टैक्ट्स हैं यहाँ पे और नॉर्थ इंडिया के अंदर तुमको कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत है. इट्स डिफिकल्ट अदरवाइज. मेडिकल केयर के मामले में जयपुर इज अ प्रिटी डिसेंट डेस्टिनेशन. देयर इज एन एयरपोर्ट सो यू कैन टेक फ्लाइट्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो उस सब मामलों में जयपुर इज इट्स अ प्रिटी डिसेंट प्लेस. यस देयर कैन बी अदर ऑप्शंस. तो तुम क्या सोचा है, सिंगापुर या कुछ मतलब पोर्चुगल टाइप कहीं यूरोप में जाके बीच के ऊपर? भैया सिंगापुर तो ना हो पाएगा. Singapore is probably not workable. मतलब it'll probably be back in India. अब India even we've like thought of a lot of places. We thought of the metros and we eliminated each one of them. जैसे NCR was out क्योंकि हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है. बॉम्बे थोड़ा लिवेबिलिटी, बैंगलोर तो खैर traffic. So finally, I think we realized it would have to be a metro, good education, healthcare, access, weather, pollution, factoring all these in. Yeah, right now Hyderabad seems like a good choice. After Hyderabad or something. Have you taken any flats or land or property in Hyderabad? No, nothing like that. It's more like, okay, if we go back, we'll probably go there. If let's say it checks a lot of boxes, quite accessible. So abhi to matlab that's how we are thinking. Yeah, abhi once we take that decision, we'll probably land back. Then we'll decide to buy a house and all that. Abhi because it's so unclear. मतलब I don't want to like commit myself to a place कि भैया घर खरीद लिया और फिर वहीं पे जाके रहना पड़ेगा. Or I decide not to stay there, then I have to worry about disposing of that property. So I'm holding that decision till I've made my own. तो हाँ, बट कम से कम तुम चीजें एलिमिनेट तो कर ही सकते हो. जैसे कि मतलब फॉर समवन लाइक मी, गुजरात, बिहार जहाँ पे अल्कोहल नहीं है, दोज प्लेसेस आर क्लियरली आउट. ना हो पाएगा. I think on that note, before this goes any more off track, I think this is probably a good time to wrap up the discussion. So to summarize, the next episode we'll do will be, so what does it mean? How much money do you need to retire? Just make sure you have some of these numbers calculated. What are your current annual expenses? Or if you have some major life decisions like marriage or children that are on the way, you might want to factor that in when you're taking a retirement decision. Capital expenses, you plan to buy a house, you plan to buy something significant, a big land or some big investment that you have in mind. And what are your long-term goals? How do you see yourself retiring? What quality of life, which means what's the kind of lifestyle that will result in, or how things like what do you want to leave for your children, your end-of-life care, stuff like that. And using these figures, we talk about how we arrived at IFI numbers in our next episode. Thank you for watching, and please remember to like, share, and subscribe. Thank you.
And Bye, I think, thank you.